Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. So last class we have started with the treatment of alveolar rich carcinoma. Okay, we'll be discussing that today. We'll be continuing that. Okay. So we have seen कि डिफेक्ट हो जाता है उसको हम लोग को रिकन्स्ट्रक्ट और स्टेबलाइज करना पड़ता है. So we have seen that there is a two approach. First approach is to reconstruct immediately with a composite bone soft tissue free vascular transfer from the fibula. तो पहला अप्रोच है सॉफ्ट टिश्यू और बोनी डिफेक्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने का इज इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन विथ a composite bone soft tissue free vascular transfer which is usually from fibula. Now other approach is to stabilize the mandible with a titanium reconstruction plate and the second approach है पहले stabilize करेंगे हम लोग mandible को titanium reconstruction plate के साथ and then reconstruct the soft tissue with a myocutaneous pedicle flap. इसमें क्या था हम इमीडिएटली करेंगे विद कंपोजिट बोन सॉफ्ट टिश्यू फ्री वैस्कुलर ट्रांसफ़र और दूसरे अप्रोच में पहले हम लोग स्टेबिलाइज करेंगे मैंडिबल को विद टाइटेनियम रिकन्स्ट्रक्शन प्लेट और उसके बाद हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे. तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू विद अ मायोक्यूटेनियस पेडिकल फ्लैप फ्रॉम द पेक्टोरालिस मेजर और ट्रेपेजियस मसल और अ सॉफ्ट टिश्यू फ्री वैस्कुलर ट्रांसफ़र. ओके तो मायोक्यूटेनियस पेडिकल फ्लैप लेंगे हम लोग फ्रॉम पेक्टोरलिस मेजर और ट्रेपेजियस मसल और अ सॉफ्ट टिश्यू फ्री वैस्कुलर ट्रांसफ़र and accomplish definite bony reconstruction secondarily after further radiotherapy and or chemotherapy and a tumor free interval. Okay, तो पहले stabilize फिर reconstruction. Okay, now coming to prognosis and follow-up. Prognosis varies which depend on the tumor size, location and infiltration into bone or adjoining tissue spaces. तो इसका prognosis tumor size, location और infiltration पे depend करेगा. 5-year survival rate ranges from 40% to 60%. Now follow-up is same, an oral and head and neck examination, a mirror or fiber optic examination of laryngopharynx every 4 months for the first 2 years and then every 6 months. An annual chest radiograph or PET scan. Okay, that's all about carcinoma of alveolar ridge. Now we'll be starting squamous cell carcinoma of palate. Coming to the clinical presentation, squamous cell carcinoma of soft palate is more common than that of the mucosa over the hard palate. तो soft palate ज़्यादा common है than hard palate. Carcinoma of soft palate accounts for 10 to 15% of intraoral carcinoma, whereas carcinoma of hard palate account less than 5% of all intraoral carcinoma. But many alveolar ridge carcinoma extend onto the mucosa of hard palate. Now, carcinoma of hard palate is more common in those who practice reverse smoking. So, जो patient reverse smoking practice करते हैं या जो लोग रिवर्स स्मोकिंग प्रैक्टिस करते हैं उसमें कार्सिनोमा ऑफ हार्ड पैलेट इज़ मोर कॉमन बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कार्सिनोजन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. Soft palate regions are rarely ulcerated. They mostly appear as red-white patch and sometimes with induration, reducing the mobility of the soft palate musculature. तो वो जनरली अल्सरेटेड नहीं होते. सॉफ्ट पैलेट कार्सिनोमा रेड वाइट पैच जैसे दिखेंगे एंड समटाइम्स दे आर इंड्यूरेटेड विच मेक देयर मोबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट पैलेट मस्क्यूलेचर reduced. Now, on hard palate, the lesion are more ulcerated as part of red-white patch. और hard palate पे red-white patch तो दिखेगा लेकिन ulceration भी दिखेगा और soft palate में नहीं.
Okay, that's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe, and comment. Bye.